of Secretary INB, Shri Apurva Chandra, Managing Director of the National Film Development Corporation, Shri Ravinder Bhakar, and CEO of Entertainment Society of Goa, Ms. Shwetika Sachan. I request the Managing Director of NFDC to just do a recap of the third day of the film festival, and with 4 more days to go, we look forward to watching many more films and attending many more events. Good afternoon, friends. As you all are aware, the 53rd IFFI kick-started with a bang, and a lot of excitement is there. And there is a record number of delegate registrations, the people who are visiting this IFFI, and especially the master classes, also the masters and the sessions which we have planned are getting a very overwhelming response. And in fact, we allowed the people to even enter, so that even some were standing, some were sitting on the carpet also, but they wanted to come, and we allowed that also. And then they behaved in a very disciplined manner, and they were quite attentive while listening to the sessions. So that was the kind of satisfaction which any film festival would desire to get. In the Film Bazaar also, this time large number of filmmakers from more than 80 countries are participating with their films. A lot of excitement is there because after a long period of COVID, a full-fledged IFFI is being starting in the physical mode, with a lot of unique concepts introduced this time. As you see, there is a lot of buzz in the pavilions which have been put up for the first time. And I'm very thankful to the government of Goa, who in a record time extended the promenade and provided us the place to set up all these pavilions. The 75 creative minds, they are really excited. You know, even still that 53-hour challenge is going on. It will be about to end. By 3:30 was the finishing time. And they are not sleeping throughout the night, and the excitement is so much in completion of these films, 5 to 10 minutes films which they are making. So it's the entire festival is vibrating with a lot of positive vibes, and the people are quite excited it. And we are also taking a lot of suggestions from the international delegates who are coming in large numbers, so that we can further improve upon, and we are on a right track. And I'll request from your side also, if there are any positive suggestions, then we'll definitely like to incorporate in the next editions. Thank you. Now I think Secretary Sir will request. मैं तो बल्कि आप लोगों से ही समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या इस बार के उसमें बदल दिखा। हमारा कहना तो एक बात है, क्योंकि आप में से कितने लोग जो पहले भी आए हुए हैं गोवा के IFFI में? हम लोग तो 18-20 साल से 18-20 साल से आ रहे हैं। बस, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप बताएं कि आपको क्या जो है फ़र्क लगा। आप जरा अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन। My name is Satyendra Mohan. I am a retired additional DG from the Ministry of Defence. Cinema has been purely my passion and love. And this is my 40th IFFI, which I am attending 40th IFFI, which I am attending regularly without fail. I used to take leave from my office for 15 days, travel of my own to Trivandrum, Bangalore, Chennai, because I have been watching these IFFIs since 1983. And when there used to be Filmotsavs, and at the same time we used to have the IFFI alternatively year. And it was only in 2004 that we changed the system, and Goa was declared as a permanent IFFI in 2014. It started in 2004, but declared permanent venue in 2014. After a lot of struggle, there was a lot of resistance whether the Goa should be made as a permanent venue or not. Anyway, I must congratulate you, I must compliment you, the ministry. This is the best IFFI I have ever seen. Thank you. In 40 years. Thank you. In 40 You years. can have a clap for Yes. And there was a... This is the voice of a veteran who has watched 40 IFFIs. I have seen various ministers changing, various director of IFFIs changing, total administrative change in 40 years. You can imagine there could be a number of things. I have seen here the written Attenborough attending this IFFI, the Gandhi person, all very senior person.
Now, this year, the new things which I find, I'm very glad to know that very first day, you have stopped the registration. That means the maximum quota you could accommodate, you have finished on the very first day. I have never seen this thing in my entire career of film festivals. That I would like to announce that this year the registrations are the highest ever. We have crossed the figure of 10,000. First time ever the figure of 10,000 registrations of delegates has been crossed. Absolutely, sir. Monidipa is telling me that media accreditation is also 690, which is the highest ever. And this time, NFDC, it has taken a new avatar. I have never seen such a big expansion of NFDC, putting so many stalls, 42 number of stalls, alongside the sea. I could see that the total scenario has been changed. The backside of your Marriott and youth hostel, between the space has been beautifully utilized. And thirdly, your 75 years creative mind, last year itself was something very, very thrilling, and it is a real service to the humanity. If you can do it sincerely, if you can follow it. I had even recommended to the ministry that why don't we attach a National Film Award for the 75 creatives of mind in a I would call it non-feature film category. And I had also recommended that every year we should have this contest till we reach the annual centenary year, till we reach 100 I think year. that our minister had announced that this will keep going on till, it is a permanent fixture, and by 2047 we will have more than almost 2,000 people of this category. And sir, if you attach the national award to this, it will gain its importance, and more people will be benefited. And so far as the quality of the film is concerned, that is also getting better. And this time your 75-year creative mind, you have added a new feature to this, that 53 hours contest. And I have seen that people have been working day and night, and as you rightly said, that is going to be, the contest is going to be over, and the system has been beautifully done. The very colors have been allotted to the various teams, and and every team has given a name to the name. Now we can give it to somebody else. Yeah, but the lady behind. There is much more to say. Yes, but आर्टिकल लिख दीजिएगा लंबा चौड़ा, उसमें आ जाएगा, और सर को फिर दिल्ली में बता दीजिएगा। सेक्रेटरी महोदय, मेरा नाम अजीत राय है। आपने मेरी बुक का कान फिल्म फेस्टिवल में लॉन्च किया था। मैं पिछले 10 सालों से कान, बर्लिन और वेनिस कवर कर रहा हूँ, और IFFI भी 18-20 सालों से। दो तीन चीज़ें मुझे करनी है। एक तो स्क्रीनिंग की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह 8 बजे जो खोलते हैं ऑनलाइन, और 1-2 मिनट में वो सब हाउसफुल है, तो परेशान है। जैसे कैन में होता है कि 105 फिल्म होती है और उसकी सो मेनी रिपीट स्क्रीनिंग होती है, तो एवरीबडी कैन वॉच द फिल्म। आपका ये है कि एक तरह से हमारे यहाँ क्योंकि नंबर ऑफ फिल्म्स ज़्यादा हैं, तो या तो फिल्म्स को कम हाँ, करें और फिल्म्स कम कीजिए। किसी भी फेस्टिवल में इतनी ज़्यादा फिल्में नहीं होती। ये भी है कि हमारे यहाँ, क्योंकि ये जो हमारा वो था कला एकेडमी, वो पिछले 3 वर्ष से, क्योंकि वो सबसे बड़ा हॉल यहाँ का वो था, लगभग 1000 से ज़्यादा कैपेसिटी का, और वो अभी इस बार भी हमारी अपेक्षा थी कि तैयार हो जाएगा, पर वो अभी तैयार इस बार भी नहीं हुआ, और उसमें 1000 से ज़्यादा की कैपेसिटी है। मेरे कितने 2 हॉल है वहाँ पर या कितने हैं? हाँ। दूसरा, यदि स्पेस खाली हो तो मीडिया को अलाउ कीजिए कि वो वहाँ पर जा सकें। आप इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो हो जाएगा। मान लीजिए आपके हॉल में बुकिंग फुल शो कर रही है कंप्यूटर में, और स्पेस खाली हो, बहुत सारे लोग नहीं जाते, तो एक क्यू मीडिया के लिए होती थी, पहले होती थी IFFI में, जो 5 मिनट पहले वो मीडिया वाली क्यू ओपन करते थे और जितनी स्पेस होती थी वो दे देते थे। तीसरी बात ये है, जैसे आप लोगों ने डिसेबल फ्रेंडली फेस्टिवल की बात की है, तो जैसे मुझे कम दिखता है, और मैं 4 दिन से परेशान हूँ कि प्रोग्राम कहाँ है। कहा जाता है कि मोबाइल में है, मोबाइल में प्रॉब्लम होती है। यदि ये डिसेबल फ्रेंडली है तो ये बहुत अच्छा होता था, यहाँ प्रोग्राम बांट दिया जाता था, इतने रखे जाते थे, हर कोई आता था, प्रोग्राम देखता था, 4 दिन का अपना प्लान बना लेता था। तो यदि आप वो प्रिंट कॉपी में मिलना हाँ, चाहिए, प्रिंट कॉपी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा देश गरीब और निरक्षर है ना, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है नहीं।
तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और मेरे जैसे थोड़े कम विजन वाले लोगों को और प्रॉब्लम होती है। बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक। करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। So, I'll just add आपके जो points हैं, I just wanted to respond. The first thing is that वो Peacock में we have taken a decision from tomorrow we will have the schedule printed on Peacock and I would request that you would grab a copy. शेड्यूल केवल एक दिन का होता है, जी जी, तब तक वो हाउसफुल हो चुका होता है। understood. तब So, सब घर से आते हैं। जी जी, okay. And second is that 1 hour prior to the start of any show, we release all available quota category seats. We are releasing it. Now we have also started the push notifications. अभी काफ़ी लोगों के मोबाइल में आया भी होगा कि that we are going to release all the quota so that let's say कि मीडिया के X number of seats and it is not booked. We are going to release it for everybody to be able to book it. उसमें कोई reservation नहीं है. So ये information I think was not available. So that is why I wanted to mention. So I'm Gauri from Times of India. I wanted to, you said large number of international delegates, so if you could give the number. And secondly, there are some previous attendees of the festival who are saying that, you know, why not introduce the rush line during the last 15 minutes of just before the screening is about to start. Number of international delegates, Prithul, you can tell. So there are two formats. एक हमारा जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें करीबन 40 इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा यूएसए और यूके से हैं 15 40 के बल्कि 50 से ऊपर होंगे और बाकी जैसे हमारे रशिया के, बांग्लादेश के, जर्मनी के काफ़ी डेलीगेट्स आए हैं इस बार। टोटल 39 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आए हैं जबकि पहले इतना नहीं होता था, 15 से 20 कंट्रीज़ के आते थे। वैसे फिल्म बाज़ार में इस बार एक्स्ट्रॉर्डिनरली हाई पार्टिसिपेशन है। रशिया से 41 और यूनाइटेड किंगडम से 26 और कोरिया से आए हैं इस बार काफ़ी लोग, फ्रांस से आए हैं 23 डेलीगेट्स। सो इस तरह से काफ़ी कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन इस बार बढ़ा है। बाकी आपको डिटेल लिस्ट नंबर्स की दे दी जाएगी इसकी। हेलो, मैं सिराज सैयद बोल रहा हूँ, filmfestivals.com का इंडिया कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। I have attended 43 international film festivals. Satinder is an old friend and he's just behind me. There are several suggestions and reactions and I'm making it very brief. Firstly, let's not go after numbers. I have heard in the past 11,000 and 12,000 also. But if we have a capacity of 2,000 and 12,000 delegates are registered, then you have 10,000 unsatisfied people. That situation is not to be encouraged. That's what I feel. Secondly, the international competition section films, many of them are being screened at Porvorim. Yes, this is the way. And you are having up to 3 or 4 international competition films on the same day. So it is not possible to get tickets for all 4. You might get for 1, but you won't get for 3. The suggestion is to have the international competition film screening in Inox Panji, and if there is a repeat, you can have it in Porvorim. There is no problem with that. Instead of other films being screened there, the international competition films can be screened here. The other suggestion is that many, many years ago, we were promised a festival complex. I think about 2004 itself. 16 years, the festival complex has not come up. Kindly look into this and revive it as far as possible and make sure that it also contains a residential accommodation so that, you know, people can be accommodated there itself. I'm not saying everything should be free, but if there's a complex like that, it'll go a long way in making the festival more successful. I think your comment on programming is very well taken, and you have rightly said that the international competition actually is the most important part of any film festival, and they should get the prime place in wherever the prime auditoriums are. And we will take care from next year, this year to whatever, but I think it is a very, very valid suggestion.
And also that there should be some repeat screenings at least of the international competition films which people would like to see, because they are the films which are competing for the Golden Peacock. Yes, and the last thing is related to the Film Bazaar. The Film Bazaar works entirely independently, and whenever media people go there, they are treated like outsiders. They don't get That registration. integration also we have discussed with NFDC, because earlier they were two different entities basically which were handling Film Bazaar and this thing, but earlier Film Bazaar was by NFDC and this place was by Directorate of Film Festival. Now NFDC has become one, but probably that legacy this time may have been there. But in fact, today morning only we were discussing that next year onwards, at least things like media, then those, even those who are coming, let's say a major producer or who is coming here for the master class or a director, they should also be going to the Film Bazaar, and also because there also they would be interested in seeing what is available in the market. So that sort of a linkage has to be there, and we will work on that next year. फिल्म बाजार और इसका बिल्कुल अलग है, बिकॉज यहाँ तो जो फिल्में देखने का है, देयर इट इज अ मार्केट, इट इज नॉट, इट इज मोर ऑफ अ सीरियस बायर सेलर सॉर्ट ऑफ अ मीट. मीडिया के लिए इट कैन बी कॉमन. That is what I agree. Media के लिए it can be common. It's the same Not media television. that will go there. I'll just like to clarify Ji, few Ravinder points. I agree there are few infrastructural issues. Number of screens we are lacking. Since Kala Academy was under renovation, so it will come up probably by next year. So few things will be streamlined. This year we introduced another section, the Gala Premiere section, which is very much required for visibility of the festival. And Gala Premieres has to start with a red carpet, and the red carpet was not possible at the Purbury with the kind of location it has. So few of the international competition films with a very heavy heart we have to shift at Purbury. Probably that we will do next time within this premises. So this time a lot of new things were added up, a lot of new challenges were coming up. So we have to kind of a very fine balance among these. So your points are very well noted. As far as Film Bazaar is basically market of the film festival, which you see in any of the Cannes, since you have been to the many international film festivals, the Marshallu films, the Cannes film market. There the media has no, because there has to be some kind of a distinction being made between both these film markets and the film festival venue. There most of the international buyers, sales agents, they come, they watch the film in the viewing rooms. Although the media was allowed in the knowledge series sections, they can register themselves, but the separate registration has to be required because the kind of functional requirements at both these places are different. So knowledge series was covered by the media, the sessions are very well being planned by the media, but if you want to go in the viewing rooms in the knowledge series where the serious buyer sellers meets are going on, they are viewing their films, so they don't want, because if somebody wants to watch a film at peace, so that sanctity and that decorum has to be maintained. So please, my request is you try to understand the functional aspects of both the components and then accordingly put your requests also. No, there is no problem with the dual registration. The problem is that an entirely different set of journalists is invited to the bazaar. It's not. I agree. I think we will have a look wrong. at it. We will have a look at it next year, because it is not. We'll have a look. Which shouldn't be the case. That's all I say. Hi. I think for the last 2 days we have discussed this issue plenty of times and we have come out with a solution. I don't think so, sir, because पहली बात तो जानना है कि सरकार की तरफ से अगर पैसे खर्च करते हैं इस फेस्टिवल को, लगभग आप इन्होंने कहा था 47 करोड़ को स्पेंड करे, तो प्राइवेट कंपनी को क्यों एक्सक्लूसिव राइट दिए जा रहे हैं? इफ ऐसा है किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाए तो लेट देम स्पेंड 50 करोड़, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हम लोग आएंगे भी नहीं. अगर सरकार स्पेंड करे तो प्राइवेट कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट्स कैसे सर मिलते हैं? फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग सर, हमने बहुत बार एनएफडीसी के पास भी जाने की कोशिश की, पीआईबी भी परेशान है, ईएसजी वाले भी परेशान, सब लोग परेशान है बिकॉज दे आर नॉट एंटरटेनिंग. आई डोंट नो इस सजेशन के बाद क्या होगा, क्योंकि एक मीटिंग हमारी पहले भी हो चुकी थी विद द प्रेस, जो फ्रेटर्निटी उनके साथ, वहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए थे. उसके बाद में जस्ट पूछने के लिए गए एनएफडीसी वालों को, तो उन्होंने कि आप कौन हैं, हु इज़ मीडिया, दैट वाज द एक्सप्रेशन दे हैव गिवन मी. ओके, तो उसके बाद में उस सजेशन का क्यों कुछ भी नहीं हुआ था. रेड कारपेट पे जाने नहीं मिलता,
जो ESG प्रोवाइड करते हैं, ये जो पूरा बिल्डिंग या फिर आइनॉक्स ESG प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे जाने को नहीं मिलता. Is this a big scam going on over here? Just a minute. I'll answer your. बोलते हैं कि डिप्टी की ऑर्डर है, ये डिप्टी एक कौन है? second. We should not discuss any individual here. I'll reply to your questions one by one. Number one thing. As far as the red carpet access was concerned, we modified the alignment of the red carpet totally after discussing with you, and I think now this issue was sorted out. You are again raising this issue here. I don't know what the purpose. नहीं, आज का मैं एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ. सर कबीर खान आए थे, वो बाइट देना चाहते थे, लेकिन आपकी जो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर है, वहाँ पे वो उनको रोकती है. नो मीडिया, नो बाइट, ओनली टू द स्पेशल बाइट टू दैट समवन वाज देयर ऑन रेड कार्पेट. अगर एक किसी को राइट दिए गए सर, तो हमें क्यों ये नहीं, मीडिया के इंटरेक्शन के लिए दिस इज द प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम विच वी हैव प्लान्ड, एंड इफ एनी मीडिया इंटरेक्शन इज प्लान्ड दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू यू ऑल्सो. देयर should not be any discrimination with the local media or the international media or the national media. So second thing is ki you are talking about the kind of expenses incurred by the government, and then if you want to scale up the festival, everything comes with a certain cost. Yes. And you don't know how much the sponsors are bearing. That's why you are raising this question ki the government is putting this much. Because this entire red carpet management also, the opening and the closing ceremonies also, I think you have been attended the opening ceremonies also. So these things comes with a cost. So government is spending their part because we don't want to compromise with any functional aspect of the festival. But then the infrastructure has to be augmented, and those extra expenses has to be borne by the sponsors. This is nothing new. This is the world where this is the practice adopted. So please try to understand, we are going for a big change. So we want your cooperation in this big change, and we will definitely going to listen you out. We are not going to ignore you. We want your involvement. कुछ स्टैटिस्टिक दे सकते हैं, how much government is spending and how much the private agencies are spending? Your figures are totally wrong. That is all I can say. कितना सर आप ये I did not say वो क्या government spend कर रही है, but your figures are totally wrong. क्यों सर On the higher government side. का- चलिए, go to the next question. Hi, my name is Harshida Vedpathak. Out of 26 years, I'm into journalism, entertainment, film criticism. That's my forte. Out of which 23 years, I'm in covering IFFI continuously. During Corona, also I was here. I have few suggestions and few pointers to be put in here. I like the film selection so far for past 3 days. Films were good, selection was really good. Only the management is a problem, as Mr. Siraj and the fellow was saying. I had a very big fraction with the XYZ entity who were not allowing me to stand and do the bite. If I'm spending my own money, I'm putting my own time, why would someone else will stop me and dictate me? इधर नहीं खड़ा होने का, ये नहीं करने का, why? Ma'am, just a minute. And let me just complete. And as Siraj sir said, कि the international competition. But you know what suggestion I have, like अगर मीडिया सेंटर इधर है, मेन सेंटर भी इधर है, तो वाई नॉट हैव द फर्स्ट स्क्रीनिंग हियर ओनली. सो एज वी आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, कभी टाइम नहीं मिलता है कुछ करने के लिए. सो द व्हाट यू कॉल द टीम ऑफ द पर्टिकुलर फिल्म्स, even you and the other official will be here to talk about. So what my suggestion is that like every year, let's have a first screening here only, and later on you take the second screening wherever you feel like. Because running from pillar to post, again going to Parvani, physically not possible. We are here to cover, we are not here to fight, not into argument also. We want to save our time. Yeah. Ma'am, as far just मूल बात ये है कि ये सब लोग 20 साल से कवर कर रहे हैं, हजारों आर्टिकल लिखते हैं. प्लीज शो सम रेस्पेक्ट टू देम, और उनकी फैसिलिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए. क्या लगता है? फैसिलिटी मांग ही नहीं रहे हम लोग. जब अपना पैसा और टाइम डाल के आ रहे हैं तो हमें रोका ना जाए काम करने से. अदर डे वन गर्ल वाज सेइंग कि आप किस तरह कर सकते हैं. दैट पर्सन विल नॉट listen गिव your द बाइट. question, ma'am. We will try to accommodate as much as possible, but since I'll let you explain my practical difficulties also. The star cast of a big film was waiting at the entry of the red carpet. The stars were not getting down from the car because there were serious security concerns. They were about to go back. They have asked me, if your security is being compromised, we are not going to walk the red carpet. Just a minute, ma'am. And you were also there at the red carpet. I requested you, please leave the red carpet. You are not wishing to leave. Anyhow, that's a different issue. Because you PR only invited me Please, initially. just listen. Let me complete first, please. So, if we want to do something big, we have to assure them your security will not be compromised. I personally ran around 50 times in the red carpet. Please, ma'am, please don't interrupt me. We all are professional journalists. Ma'am, I understand. No one is a fan here, so you did not have to bother. Ma'am, but there has to be a certain decorum at the red carpet that needs to be maintained. Ma'am, please. I gather it. There Yes, is, sir.
I mean, I was there on the Drishyam red carpet, Yes. and I think the star cast stayed for quite some time there and Your interacted with the officer media. only clicking the picture, sir, and they were just cogging therein. अरे भाई आपसे इंटरेक्शन हुआ या Sir, नहीं हुआ? your staff अब only ये- was clicking the We picture. can't be allowing people on the red carpet to walk along Sir, with the your stars. staff That is only not were possible. clicking, police were clicking the pictures. That is not We possible. were, you check the recording, sir. Police and the staff. Madam, we'll just move on to the next question. We'll I sort, don't mind we'll you sort. move on, Please but move on topic to the will be next remain the issue. same. MD and FDC has said we'll See, sort you made that everybody's person problem. stop, you made him stop, you made me stop, but topic remain the same. Please move on, give the solution, that's the basic thing I'm asking. We are listening, we are here having the press conference for you. Please let the others also ask. But no answer is coming in, ma'am. Please pass on the mic to him. ले लीजिए. जैसे वहाँ से सिग्नल मिलता है तो आप यहाँ बंद कर दो क्योंकि अदरवाइज आपको आप भी अभी मैं अप्रॉक्सीमेटली 3:30 वहाँ आया 3:20 आया था, मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए आने था, लेकिन मुझे रोका गया और मुझे बोला कि आपको यहाँ से अलाउ नहीं करेंगे। अभी की बात करो तो जैसे आपका कोई भी गेस्ट आने दो, रेड कारपेट का कोई इशू नहीं है, जो आपके हिसाब से करने दो, लेकिन मिनिमम बहुत टाइम से, जैसे कि वहाँ आपको सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ यहाँ गेस्ट आए हैं तो आप बंद करो, तब तक जो आपके लोग पीछे थे ना, जो कई जिन्होंने कहा कि मैं 40 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गया हूँ, उनसे पूछिए कि वहाँ के रेड कारपेट किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है और कितने लोग जा पाते हैं रेड कारपेट पे। जाना ही नहीं चाहिए सर। कोई नहीं जाता ना फिर। मेरा क्वेश्चन शायद सर मेरा क्वेश्चन शायद समझा। जस्ट मिनट मेरा क्वेश्चन शायद नीचे बैठो पहले, पीछे कैमरे भी है, नीचे बैठ जाओ। इशू ये है कि हमें रेड कारपेट पर अलाउ करना है नहीं करना है, ये आपकी मर्जी, आप मत करो, कोई इशू नहीं, आप आपके हिसाब से काम करो। मेरा इशू एक बार उनसे पहले ये पूछ ले कि बाहर के रेड कारपेट कैसे चलते हैं। सर जरा मैं नहीं बताना चाहता, आप बताइए जरा बाहर के रेड कारपेट पे कौन लोग जाते हैं। जस्ट प्लीज मेरा इशू आपको समझा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं। पहले एक बार मैं सुनना चाहता हूं उनसे कि बाहर के रेड कारपेट कैसे चलते हैं। देखिए सर, रेड कारपेट तो कैन में आप भी होते हैं, हम भी होते हैं। कैन फिल्म फेस्टिवल का रेंज देखिए कि 50,000 डेलीगेट होते हैं, 5,000 मीडिया होता है। यहाँ तो 600 नहीं संभाला जा रहा है, 5,000 मीडिया होता है। कैन फिल्म फेस्टिवल की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में अभी आज तक मीडिया ने कोई कंप्लेन नहीं किया है वहाँ। और मीडिया को कौन संभालता है? 5 लोगों की प्रेस टीम संभालती है। ओनली 5 पीपल आर हैंडलिंग 5,000 मीडिया इन कैन फिल्म फेस्टिवल। क्वेश्चन ऑफ कंप्लेंट, आई आस्क्ड यू हु वॉक्स ऑन द रेड कारपेट। नहीं, रेड कारपेट की दूसरी चीजें हैं वहाँ। आप पहले उस सवाल का तो जवाब दीजिए। देखिए, रेड कारपेट में कोई भी मीडिया और कोई भी आम दर्शक अलाउ नहीं होता, जो सेरेमोनियल रेड कारपेट है। लेकिन रुको ना, रुको थोड़ा बोलने दो। हाँ, इशू क्या है कि जो आप बंद करते हो ना बीच वाला रास्ते की बात करो। क्या आपका आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। लेकिन अपूर्व चंद्रा जी, तो आप लॉक करो, कोई इशू नहीं, जाते तक शुरू करो। अच्छा चलो वो हो गया, वो कर लेंगे। आप उसका रिले कर दो ना, जैसे कि कैन में होता है कि हम सब मीडिया वाले ऑडिटोरियम में डेबुसी में बैठे होते हैं, रेड कारपेट चल रही, हम लाइव देख रहे हैं, वो ठीक तो है, हमें जाने की जरूरत ही नहीं है वहां पर जो है वहां कर सकते हैं, ये बात ठीक है। तो वो लाइव होता है ना स्क्रीन पर, तो ऑडिटोरियम में जहां तक सर लाइव पहले होता ही था, पिछले टाइम होता था। नहीं, मैं कैन की बात कर रहा हूँ, वहां वो लाइव होता है, तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं। और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी, दिखा सकते हो, बड़ी स्क्रीन पर दिखते हैं ना, तो हम लोग तो डेबुसी में बैठकर ठाट से देखते हैं रेड कारपेट। थैंक यू। रास्ता बंद कर देगा, मैं समझ गया आपका, वो जो उधर से रास्ता है वो बंद कर देगा। ठीक है, आधा घंटा I'll just say we tried not to block this passage of crossing. This was open, but when the star cast entered, also then the people were still crossing because they do not agree. So the decorum has to be maintained. We are ठीक है रविंदर, बता कि आधा घंटा बंद नहीं होना चाहिए, 2-4 मिनट के लिए बंद सर, it was matter of 5 minutes, sir. अभी 10 मिनट की बात कर रहा था सर। अभी भी आप जाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने मानने कि 2 मिनट, जैसे 2 मिनट का ही रास्ता है, तो 2 मिनट आप आराम से। No, we will pass on instructions so that there should not be any inconvenience as far as possible to the देखिए, delegates. पहली बार है सबके लिए थोड़ा सा जो है, क्योंकि रेड कारपेट यहाँ पर पहले था ही नहीं। पहले तो रेड कारपेट इधर को होता था, तब कोई रेड कारपेट में चलता ही नहीं था। तो अब इस बार कम से कम रेड कारपेट को हम एक जो है प्रथा बनाना चाह रहे हैं इस फेस्टिवल में, क्योंकि रेड कारपेट से एक बस क्रिएट होता है। अब कांस में भी अगर आप रेड कारपेट सुने, आप तो गए हुए हैं कई बार, अब वहाँ टॉप गन मैवरिक आती है, वो कोई कॉम्पिटिशन सेक्शन के लिए नहीं है, केवल वो भी फिल्म का एक फेस्टिवल का
एक फेस्टिवल का वो बढ़ाने के लिए है, तो उसको वो कोई कंपटीशन सेक्शन में नहीं है, तो यही रेड कारपेट का यहाँ भी उद्देश्य है। हाँ, लेकिन आपकी लिमिटेशन है ना यहाँ, पर यहाँ जगह थोड़ी सी छोटी है। अगर अब ये इस बार ये जगह सोची गई, पहले तो जो हमेशा रेड कारपेट होता था उस पर तो कोई चलता ही नहीं था, बिल्डिंग के अंदर आ जाते थे। कला एकेडमी में उसको ले अब कला एकेडमी वही, अब कला एकेडमी में क्योंकि अब बना नहीं तो हम कला एकेडमी में ही होगा सारा का सारा पीरियड, तो वो अगले साल से मेरे ख्याल से ये इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए जब कला एकेडमी में चला जाएगा। I am Neeraj Prabhu from livenewsgoa.com web channel. This year the opening film was screened before the opening ceremony. What was the thinking behind that? The thinking was very, clear that we should properly honor the opening film of the festival. And last year, because what happened was, because there was rain and then there was the opening function went on long. This year also, 1 घंटा exceed हुआ. So the minister, the CM, any of the dignitaries could not actually be in the opening film. तो इसलिए ओपनिंग फिल्म को पहले कर देना से इस बार जो है प्रॉपरली उनको हम ऑनर कर पाए, जो भी उसके डायरेक्टर एक्टर वगैरह जो भी आए थे उनका प्रॉपर रेस्पेक्ट कर पाए। ओपनिंग फिल्म शुड बी, फिल्म फेस्टिवल का ओपनिंग फिल्म है, दैट शुड बी प्रॉपरली रेस्पेक्टेड। बाकी जो हमारा अब इस बार भी अब आपने देखा होगा 1 घंटा 9 बजे खत्म होना था, 10 बजे खत्म हुआ हमारा कार्यक्रम, तो वो तो जो भी कारण है तो वो उसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो ओपनिंग फिल्म कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं होनी चाहिए फेस्टिवल की, लेकिन उसकी रिपीट स्क्रीनिंग होनी चाहिए, वो ठीक है। ये आपके बात जो आपने कहा कि कुछ मीडिया के लिए कंपटीशन सेक्शन की जो फिल्में हैं उनको थोड़ा सा हमें 1-2 बार रिपीट करना चाहिए, ये बात आपने ठीक कहा। प्रोग्राम्स सर, एक थोड़ी सी एक बहुत ज़बरदस्त समस्या आ रही है। आई हैव कम हियर एज अ डेलीगेट पेइंग 1180 रुपीज़, वॉट एवर इट इज, दैट इज़ नॉट द मैटर। मैटर ये है सर, यहाँ आके वो पॉइंट शायद रेज किया गया है मेरे आने से पहले कि जब भी आप टिकट कोई बुक करते हैं उसमें नो अवेलेबल आता है सर। अब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम सर, क्या है प्रॉब्लम, क्या है सर? प्रॉब्लम इज आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली, आई हैव नॉट कम टू सी द पोस्टर्स ओनली हियर, आई वांट टू सी सम मूवीज आल्सो, टू एंजॉय सम मूवीज आल्सो। अब सर, अब आई थिंक इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स नाउ, क्योंकि ये बहुत बड़ा कुछ ऐसा बन गया है सिस्टम जिसमें अर्लियर वो रिजर्वेशन होता है और वो फिर बाद में सॉर्ट आउट वो प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले क्या होता था सर, पहले ये होता था क्योंकि मैक्सिमम कई बहुत सारी सीट्स खाली होती हैं, व्हाट दे से कि वी विल नॉट अलाउ यू अनलेस इट इज रजिस्टर्ड हियर इन योर कार्ड। पहले क्या करते थे, अगर वो देखते थे बिफोर 5-10 मिनट्स पूरा ऑडियंस नहीं आता है, उसके बाद 5-10 मिनट भी दे वुड अलाउ द पीपल टू कम इनसाइड एंड सी द मूवी। इस बार दे आर नॉट अलाउइंग सर, इस पर ज़रा थोड़ा सा गौर करिए, अदरवाइज एक्चुअली अभी पहले भी किसी ने वो रश आवर मीडिया के लिए रश आवर का जो आपने कहा वो भी मेरे ख्याल से सोचा जा सकता है। और ये Sir, I'll clarify, there is a quota, there's a number of seats for every category. Even media has been given a reservation of certain number of seats, so your own fellow media would have booked those seats. That's why sir they're showing not available, not because that we have put it on the system and we are trying to create a artificial scarcity. That is not the intention. Like again I said, we release all unbooked quota reserved seats 1 hour prior, and if you would check the portal or the app 1 hour prior, you can go in and book those seats. So the issue is just being that we have some for students, we have some for media, we have some for other category delegates, and that is why when you might be booking, maybe some other of your fellows have already booked that, and that's why it's showing unavailable. But yes, 2 issues. Number one is the capacity of our screening halls, and the other being repeat telecast of important movies not happening might also create that scarcity. And again, we have an exceptional number of delegates this time, and definitely, but it's not that people are not able to book. Some people are able to get it and some people are not, and so we'll definitely look into that. So the system is working correctly. What you have said is कि वो I think we discussed this issue before this festival also कि हम जो जैसे एक waiting list टाइप या वहाँ पर कोई क्यू ऐसी बना सकते हैं जो waiting की, क्योंकि what she is saying is about 1 hour before, but जो लोग no show है उसके अगेंस्ट प्रीवियसली होता था, अब कर दिया वो। तो अब मुझे लगता है कि इफ़ वी कैन ट्वीक आवर सॉफ्टवेयर कि हम 10% ऐसा भी रखें जो कि जो है नो शो के अगेंस्ट, दोज हु डोंट हैव द राइट टू एंटर बट क्लियरली इट इज़ अगेंस्ट अ नो शो। तो बाहर और फेस्टिवल्स में होता है नो शो के अगेंस्ट, अगर जो है वो उनको वी कैन प्रॉब्ली थिंक ऑफ इट नेक्स्ट ईयर। आई थिंक आई हैव अ सेशन देयर, सो आई विल हैव टू